Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. तो हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर इज जनरल फार्माकोलॉजी. So in our previous video presentation, we understood the concept of pharmacology. So what is this pharmacology? Pharmacology is nothing but it is the study of drugs. Now, in our previous video presentation, also saw कि जो pharmacology होता है, it can be further classified into two of its main branch. Very first one is known as pharmacokinetics and the second one is known as pharmacodynamics. तो जब हम हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, जब हम वो स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. ऑन द अदर हैंड, जब हम ये पढ़ाई करते हैं कि ड्रग ने हमारे बॉडी पे काम कैसे किया, दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज फार्माकोडायनामिक्स. So today in our today's video presentation, we are starting with one of the most important branch of pharmacology that is known as pharmacokinetics. Now we all know कि ये जो pharmacokinetics होता है, इसके अंदर हम 4 पैरामीटर स्टडी करते हैं. The very first one is known as absorption. The second one is known as distribution. The third one is known as metabolism, and finally our drug is getting excreted out from our human body, and the fourth important parameter is our excretion of the drug. So ये जो pharmacokinetics होता है, it is also known as ADME study. So today let us understand. I will give you a brief understanding. आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. The very first thing that we are going to discuss is about the concept of absorption. Now ये जो absorption of drugs होता है, we have different mechanism for absorption. So we are going to understand 5 important mechanism of a drug absorption. We are going to see a very beautiful concept of simple diffusion, followed by the concept of aqueous diffusion. Then we will understand concept of filtration. Then we will see the concept of endocytosis. And finally, we are going to understand the concept of carrier mediated transport. So without wasting any further time, let us get on to the very first topic, that is the concept of absorption. Now before starting the concept, let us take an example. Let's suppose मेरे को बुखार आया and मैं मेडिकल स्टोर में जाता हूँ and I ask the pharmacist give me a tablet of paracetamol. The pharmacist give me the tablet of paracetamol and घर आते आते जैसे ही मैं घर आया, मैंने वो पर्टिकुलर टैबलेट को with the help of oral route I took that paracetamol tablet. तो जैसे ही वो मैं टैबलेट ओरल रूट से लेता हूँ, कैन आई से दैट टैबलेट इज गोइंग इनटू gastrointestinal tract, and to be very precise, it is going into my stomach, and then stomach के बाद it is going into the part of small intestine, that is our duodenum. Now I want you imagine this particular scenario and I want to give you a better clarity of this particular concept. So as you can see on your screen, this black color dot is representing our drug and this entire system is our gastrointestinal tract. यहाँ पे जो ग्रेइश कलर में आपको जो सेल्स दिख रहे हैं, they are the cells of our gastrointestinal tract. Now just think कि ये जो particular drug है, it has to get absorbed. So don't you think in order to get absorbed into our systemic circulation, ये जो drug है,
तो सेल्स ऑफ जीआईटी को क्रॉस करना पड़ेगा. कैन आई से दिस पर्टिकुलर सेल्स आर एक्टिंग एज अ बैरियर. तो जैसे ही ये जो सेल्स जो हमारे बैरियर बन के बैठे हैं, तब ये ड्रग ग्लूकोजल बैरियर को क्रॉस करेगा. ऑल द कंटेंट्स ऑफ अवर जीआईटी, इट इज अ ड्रेनिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेन दैट इज नोन एज पोर्टल वेन. पोर्टल वेन में जैसे ही हमारी ड्रग जाएगी, उसके बाद दैट पर्टिकुलर ड्रग इज गोइंग टू अवर ऑर्गन दैट इज अवर लिवर. एंड फाइनली जो हमारा ड्रग है, इट इज गेटिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन आई से अ ड्रग इज एंटरिंग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, वेन्स में ड्रग जा रही है कि आर्टरीज में ड्रग जा रही है? Answer is very logical and very simple. When I say a drug is entering into systemic circulation, I am talking about the venous circulation. That is, जो हमारा ड्रग है वो वेन्स में आना चाहिए. तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, क्यों ड्रग वेन्स में जानी चाहिए? आंसर इज वेरी सिंपल. हमारा जो वेन्स होता है, इट इज सप्लाइंग द ब्लड टू अवर ह्यूमन हार्ट. जो वेन है, जो वीनस सर्कुलेशन है, दैट इज ड्रेनिंग इनटू अवर ह्यूमन हार्ट. एंड एब्जॉर्प्शन के बाद हमें ये पता है देयर इज द सेकेंड फेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब तक हम वेन्स में ड्रग को नहीं पहुंचाएंगे, जो वेन्स का कंटेंट है वो हार्ट पे नहीं पहुंचेगा. एंड अगर हार्ट पे अगर नहीं पहुंचा, so heart is the organ which is distributing that particular drug to our entire body system. So कभी भी मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीनस सिस्टम. तो जो ड्रग है वो वेन्स में जाना चाहिए. तो हमें ये बात पता चल गई कि जो ड्रग है उसको अल्टीमेटली मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसको लाना है. For that, our drug need to cross the barrier, and this, my dear friend, is known as the concept of absorption. What is this absorption? Absorption का मतलब होता है the barrier drug needs to cross in order to reach systemic circulation. So as you can see on your screen, यहाँ पे जो सेल्स ऑफ जीआईटी है, जिसे हम म्यूकोजल बैरियर भी बोलते हैं, अवर ड्रग नीड टू क्रॉस दिस बैरियर. एंड जैसे ही ये पर्टिकुलर ड्रग ये बैरियर को क्रॉस करेगा, इट विल एंटर इनटू द पोर्टल वेन. एंड वहां से ये जो ड्रग है वो पहले लिवर में जाएगा, एंड देन दैट पर्टिकुलर ड्रग कैन गेट इनटू अवर सिस्टमिक सर्कुलेशन. एंड बाद में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो लेट अस सी कि कौन से ऐसे डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसकी हेल्प से जो हमारा ड्रग है ये बैरियर्स को क्रॉस कर पाता है. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन. अब ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिव डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ लोअर कंसंट्रेशन. नाउ आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. वी नो कि जो हमारा सेल होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो सपोज मैं आपको बटर देता हूँ एंड मैं आपको पानी देता हूँ, एंड आई टेल यू ये जो बटर है उसको आपको मिक्स करना है पानी के साथ. डू यू थिंक दैट बटर विल गेट प्रॉपरली डिजॉल्व और मिक्स्ड इन दी वाटर? द आंसर इज नो. सिमिलरली, ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाला सिस्टम होता है, it allows only the lipid soluble drugs to cross the cell membrane. Why? Because जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है,
इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड जो भी सब्सटेंसेस लिपिड सल्यूबल होंगे वो इजीली इसमें से पास हो जाएंगे. तो दिस सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन is very useful for those drugs that are lipid soluble in nature. So as this drug is moving from higher concentration gradient to lower concentration region, there will be no energy requirement. That is why this particular process is known as passive diffusion, and it is along the gradient, that is along the concentration gradient. Now you need to remember one thing. Most of the drugs, they are getting absorbed by this method, that is simple air passive diffusion. So I have a question. क्या सभी ड्रग्स जो मार्केट में प्रेजेंट होते हैं तो वो सभी ड्रग लिपिड सल्यूबल ड्रग्स होते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग वाटर सल्यूबल होगा? द आंसर इज यस. ऐसा होता है कि जो हमारे ड्रग्स है वो वाटर सल्यूबल है. तो अगर वो पर्टिकुलर ड्रग वाटर सल्यूबल है, उसके लिए वी नीड अ डिफरेंट मैकेनिज्म, बिकॉज सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन allows only lipid soluble drugs to pass through it. So here comes our second important mechanism by which the drug is getting absorbed, and the second particular method is known as aqueous diffusion. So as you can see on your screen, once again we have our cell membrane, and यहाँ पे ये जो cell membrane है, it is made up of phospholipid bilayer. Now यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक cylindrical shape वाला structure which is in white color. That particular structure is known as aquaporin. तो जैसे ही ड्रग यहाँ पे आएगा, the help of aquaporin, it will enter and it will cross our cellular barrier. तो ये किसके लिए, कौन से ड्रग्स के लिए ये काम में आएगा? तो रिमेंबर, ऑल दोज ड्रग्स आर वाटर सल्यूबल, और वी कैन से आयोनिक ड्रग्स, यानी कि जिन ड्रग्स के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, with the help of aqueous diffusion, to be more precise, with the help of aquaporin, this particular drug can cross our cellular barrier. Now यहाँ पे once again the word diffusion is coming. That means it is moving from a region of higher concentration gradient to a lower concentration region. यहाँ पे as it is moving from high to low, there will be no ATP requirement. क्या कोई एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रग है तो एक्वस डिफ्यूजन के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है? द आंसर इज यस. वी नीड टू रिमेंबर one example of the drug, that is our lithium. So lithium is getting absorbed with the help of aqueous diffusion. Now moving on to our next important method, that is the process of filtration. तो हमको ये पता है कि हमारे बॉडी में एक सेल्स नहीं होते हैं, वी हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल. नाउ ये जो दो सेल्स के बीच में देयर इज वन गैप, एंड दैट पर्टिकुलर गैप इज नोन एज पैरासेल्युलर स्पेसेस. तो जो ड्रग्स ये पैरासेल्युलर स्पेसेस के थ्रू पास होके एब्जॉर्ब होती है, दैट माय डियर फ्रेंड इज नोन एज प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. So as you can see on your screen, यहाँ पे I have taken two cells, and दोनों cells के बीच में we have some kind of a gap, that is our paracellular spaces. तो जो ड्रग है वो गैप में से निकल के एब्जॉर्ब हो रही है, and that my dear friend is known as filtration. क्या कोई एग्जाम्पल है? आंसर इज yes. Whenever we are giving the patient इंसुलिन इंजेक्शन, तब ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ये हम सबक्यूटेनियसली पेशेंट में देते हैं. तो अगर सबक्यूटेनियसली हम देते हैं, डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर स्किन. ये जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे वी हैव द प्रेजेंस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स,
एंड एंडोथेलियल सेल्स के बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती है, तो द इंसुलिन मॉलिक्यूल is getting absorbed or it is crossing the cellular barrier by the spaces that is present between the endothelial cells, and this is known as filtration. Another example is our heparin. So remember, in the process of filtration, injection insulin when given subcutaneously and heparin are the two important examples of the drugs which are getting absorbed into our human body by the process of filtration. Now moving on to the next important method, that is known as endocytosis, or it is also known as endocytosis. So what is the concept of endocytosis? As you can see on your screen, यहाँ पे जो रेडिश पिंकिश कलर के आपको जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, that is our drug. So as soon as this drug is reaching to our cell membrane, can you see that our cell membrane is changing its structure? तो जैसे ही ये जो पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के पास आएंगे, सेल मेम्ब्रेन is going to engulf that drug molecules in वेसिकल, एंड ये जो वेसिकल है then by the process of exocytosis is then released further. So it is also known as cell drinking. So as it is very much evident कि ऐसा लग रहा है कि सेल कुछ पी रहा है, इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस को हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं. So there will be change in the cell membrane structure, and उसके बाद there will be a formation of a vesicle, and by the process of exocytosis जो भी कंटेंट है वो सेल के बाहर रिलीज हो जाएगा. अब ये जो पर्टिकुलर मेथड होता है वो कौन से ड्रग्स के लिए यूजफुल होता है? तो रिमेंबर, भी लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले जो ड्रग्स होते हैं, जो लार्ज इन साइज होते हैं, जो बल्कि होते हैं, उसके लिए ये एंडोसाइटोसिस और वी कैन से इनोसाइटोसिस इज यूजफुल. कैन वी हैव सम एग्जांपल? Answer is a yes. Botulinum toxin and vitamin B12 are the examples of the drugs are getting absorbed into our human body with help of the process endocytosis. Now moving on to the next important concept, that is carrier mediated transport. अब ये जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, फर्दर इट इज ऑफ टू इंपॉर्टेंट टाइप्स. very first one is known as facilitated diffusion, and the second one is known as active transport. So as you can see on your screen, यहाँ पे I have a beautiful image of our cell. Can you see that white color structure? That white color structure is our transporter. तो जैसे ही हम कोई ड्रग लेते हैं, this particular drug will get through our barriers with the help of a transporter. So as it is quite evident, carrier mediated transport or facilitated diffusion means कि हेल्प से हमारा जो ड्रग है वो सेल को क्रॉस कर रहा है, एंड यहाँ पे वी आर हैविंग once again the word diffusion. That means the drug is moving from higher concentration gradient to a region of low concentration. On the other hand, we have active transport. तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, but as the name suggests, it is a active process. Active process means to move a particular drug from a low concentration region to a high concentration region, we require energy. As you can see on your screen, happy with the our transporter, there is a very important enzyme attached to it, that is our ATPase. Happy, it is a energy dependent process by which our drug is getting from a region of low concentration gradient to a high concentration region.
So can we have some comparison between the facilitated diffusion and active transport? So here on our screen, let us compare both these processes. So facilitated diffusion, यहाँ पे as it is moving, as our drug molecule is moving along the concentration gradient, that is from high concentration region to a low concentration region, it does not require ATP. On the other hand, जो हमारा active transport होता है, it is moving against the gradient. That is, it is moving from low concentration region to a region of high concentration. यहाँ पे will be requiring the energy and यहाँ पे ATP की requirement होती है. Now facilitated diffusion में we need to remember one example of the drug, that is 5-fluorouracil. And in the concept of active transport, we need to remember name of two important drugs. The very first one is our levodopa and the second one is our methyl-dopa. So these are two drugs that are getting absorbed into our human body with the help of active transport. Now, ये जो facilitated diffusion होता है, is getting there are some important transporter and family of transporter होती है, that is known as SLC. SLC stands for soluble carrier transporter. Now इसका एक example होता है blood transporter. blood stands for glucose transporter. तो जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, glucose cannot pass our cell membrane. So, with the help of certain transporter, it is getting inside our human cell. Remember, there is a family of transporter SLC. An example is GLUT, that is our glucose transporter. On the other hand, when we study active transport, यहाँ पे एक family of transporter आता है, that is ABC, that is ATP binding cassette. And यहाँ पे we need to remember two important example. One is our sodium potassium ATPase and we have P glycoprotein. So these are the two important examples of the transporter which are belonging to the family of AB. So that's it for our today's video presentation. In the next video presentation, we will dive deep into the concept of absorption. अगर आपने वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ तक देख लिया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, like this video and share it with your friends. See you in the next video lecture. Till then, see ya, bye bye, have a good day.